हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, जिसको लेमैन लैंग्वेज में हाई बीपी भी कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द परसिस्टेंट एलिवेटेड आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। इस डेफिनेशन को हम समझने के लिए ब्रेक कर लेते हैं, द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड द परसिस्टेंट एलिवेशन। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मीन्स कि जब हम बीपी को मेजर करेंगे तो हम आर्टरीज़ में मेजर करते हैं, वेन्स का ब्लड प्रेशर मेजर नहीं किया जाता। सेकेंड थिंग इज़ द परसिस्टेंट एलिवेशन। जब हम कहते हैं कोई चीज़ परसिस्टेंटली एलिवेटेड है, मतलब कि वो एक मोमेंट्री चेंज नहीं है जो सॉल्ट इनटेक्स वगैरह से आ गया, इट इज़ परसिस्टेंटली एलिवेटेड, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बीपी हाई रहता है अनलेस एंड अनटिल यू आर टेकिंग अ मेडिकेशन। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की 4 टाइप्स हैं। इसको 4 टाइप्स में डिवाइड क्यों किया गया है? टू नो द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। जब हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन स्टेज 1 हाइपरटेंशन है या स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, तो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड हाउ मच सिवियर द डिजीज़ हैज़ प्रिवेल्ड। सेकेंड थिंग इज़ द मेडिकेशन थेरेपी। फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, medication therapy is different. For example, for the pre-hypertension stage, we can go on with a single class of medication or not using regular medication at all. For the stage 2 hypertension, we can't go on with a single class of medication. We need to add another 2 or we need to combine 2 or 3 classes of medication for the continual therapy. BP is measured in the systolic and diastolic. The systolic blood pressure is the blood pressure when the heart is in the contraction phase, and the diastolic when heart is in the relaxed phase. For the normal person who is not hypertensive, उसका systolic blood pressure 120 से कम होता है और diastolic 80 से कम होता है. For the pre-hypertension, systolic is 120 to 140 and the diastolic is 80 to 90. For stage 1, it's 140 to 160 and the diastolic 90 to 99. For the stage 2 hypertension, the systolic blood pressure is more than 60 and the diastolic is more than 100, which means when your blood pressure increases 60 or is equal to 160, it is the stage 2 hypertension. Or if the diastolic reaches 100, more than 100 is all stage 2. Then comes the stage 3 hypertension, which is also known as the hypertensive crisis. It is the stage when you need hospitalization. When you need hospitalization, there are 2 types of hypertensive crisis. Hypertensive